Hello friends and viewers, my name is Gurpreet Kaur. I am your IELTS trainer. In today's video, I am going to talk regarding the cue card, which is the cue card number 64 in the IELTS list of the speaking cue cards. And this is describe a product made in the region you come from, a popular product from your hometown. ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਪੂਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਟ ਇਜ਼ ਇਟ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਹਾਊ ਇਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਆ, ਵਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਮੇਡ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, एक्सप्लेन वाई योर कंट्री मेक्स इट, क्यों तुहाडी कंट्री इहनूं बनाउंदी आ, एक्सप्लेन वाई इज़ इट पॉपूलर, क्यों पॉपूलर हैगा है। मैं इहदे ते कीता, मैं टैक्सटाइल इंडस्ट्री अपनी कंट्री दे विच हैगी आ ते मैं उहदे अकॉर्डिंग उहदे ते ही प्रिपेयर कीता है क्यों कार्ड, मैं तुहानूं उहदे बारे ही दसदी हां भी मैं की कीता भी क्योंकि अपनी कंट्री जिहड़ी इंडिया आ उहदे विच की है डिफरेंट तरह के कल्चरस आ, डिफरेंट तरह दियां पीपल रहिंदे आ, लैंगुएजेस डिफरेंट आ, क्लोथ के अकॉर्डिंग क्लोथ से मैं बनाया कि इंडिया दे विच स्पैशली पंजाब दे विच जिहड़ी अमृतसर सिटी आ उत्थे कि टैक्सटाइल इंडस्ट्री दे लई ओह फेमस आ, जिहड़ा इत्थों कपड़ा जिहड़ा भी ओह बाहर भी जाता है। जिवें कि हुण मैं इहदे ते पहलां आपां लिखना सीगा वट इज़ इट एंड हाउ इट्स लुक लाइक, किवें दिखदा है ते की हैगा है। मतलब मैं दस्सिया भी एक ट्रेडिशनल क्लोथ्स आ जिहड़े कि मेरी कंट्री दे विच बनाए जांदे आ, ठीक है। फिर कित्थे यूज़ किया जाता, वट इज़ इट यूज्ड फॉर, काहदे लई यूज़ किया जाता है, ये की आ मैरिजेस वगैरह ते सैरेमनीज़ वगैरह ते डिफरेंट टाइप ऑफ ओकेजनस ते यूज़ किया जाता वीयरिंग करन दे लई। हाउ इज़ इट मेड, हाउ इज़ इट मेड दे विच आपां थोड़ा भी लिख सकते, ज़्यादा भी लिख सकते हैं। मैं जस्ट ये लिखा कि कॉटन वधिया क्वालिटी की कॉटन लई जाती है, उन्होंने हारवैसट किया जाता है तो फिर उस तो बाद की आ उहदे तो की आ मैन्युफैक्चर की जाती है फाइबरस या फिर फैब्रिक्स नूं मैन्युफैक्चर किया जाता। वाई योर कंट्री मेक्स इट, क्यों तुहाडी कंट्री बनाउंदी, क्योंकि आ मेरे रीजन के जिहड़े लोकी आ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गॉड गिफ्ट टैलेंट मिलिया होया कि वह हैंड एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, ਉਹਦੇ करके कि मेरे रीजन के लोग इहनूं बनाउंदे आ। ते फिर दैन एक्सप्लेन वाई इज़ इट पॉपूलर, क्यों पॉपूलर हैगा, क्योंकि ये मेरे कंट्री के कल्चर नूं, मेरी कंट्री की हिस्टरी नूं इहनूं रिप्रजेंट करता है। कलरफुल क्लोथ्स के नाल लोकां 'च ब्यूटी ज़्यादा आउंदी है, ਉਹਦੇ करके कि इहनूं ये पॉपूलर है। तो हुण मैं तुहानूं दसदी भी आपां पूरा क्यू कार्ड किवें बोल सकते हैं। स्टार्टिंग अपने इत्थों ही करनी है, मैं स्टार्टिंग इत्थों ही की है। माई कंट्री इंडिया इज़ एमिनेंट फॉर इट्स यूनीकनेस इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, एंड वन स्पैशलिटी ऑफ माई एरिया पंजाब इज़ ट्रेडिशनल क्लोथ्स with the variety of colors as well as design, and this is not only famous in my own country but also in the other countries due to several reasons. This is, first of all, this cloth is used for wearing purposes, especially people wear these kind of clothes, these traditional kind of clothes on the various kinds of occasion like marriage anniversaries, marriage parties, birthdays, whenever they go out with their friends, and whenever there is any kind of ritual that is belong to the Sikh religion, people like to wear these kind of clothes because of the heavy embroidery in these kind of clothes. How this is made, this is made with the superior quality of cotton which is grown in the farms of the people who have owned the textile industries in the Amritsar city, because this is a special city which is specialized for this kind of clothes. And also this place, at this place we can have a lot of variety of clothes of different embroideries, different colors, with the heavy jewelries, and also with having the Punjabi juttis, Punjabi footwears. This is also famous for Punjabi footwears. And after having the superior quality cotton, this is sent for the purification purposes, and when it comes from there, this cotton is made into fabric for coloring purposes. Different color of dyes and different synthetic dyes are used for making it colorful. Why is it popular? It is popular in my country due to so many reasons. First of all, the people who are making these kind of clothes, they have the God gifted talent
to complete hand embroidery, because these kind of clothes are made with the hands, therefore these enhance the beauty of the clothes, and these are not prepared by the machines due to the superior quality of the embroidery which is done by the people as compared to the machines. And also people of that area are very hard working and they are very dedicated towards their jobs. They like to improve their life standards by providing the different kinds of clothes to the people. Whenever I go to the Amritsar city, at that time I like to buy the clothes from there, because these are of superior quality and I can have these clothes on the reasonable prices. From there, after coming back from there, I tried to wear that clothes whenever I go outside, and one of such occasion when I wore this kind of suit, I got so many compliments from my friends as well as relatives, and everybody was looking at me because I was the attraction of everybody's eyes at that time. This is popular due to so many reasons, because it represents the culture of my country in front of the other people, and also the people not only from my own country but also from the other countries like to wear these kind of clothes on the marriage anniversaries, on the different kind of occasions, because these adds on the beauty of that person due to the colorfulness of the clothes. And people of that area depend for their livelihood on the export of these kind of clothes. And one of my uncle who is living in abroad, his wife always try to purchase the clothes from this city, by which she can have her status flaunt in the people who are living over there. And I also wish to God that this will flourish day by day, because so many people earn their income or earn their both meals from this source of work. So this was the end of our cue card. I think it was too long, but ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵਰਡਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੋਲ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਸੀ, ਜਸਟ ਫਲੋ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर गिविंग मी अ प्रीशियस टाइम गाइज, एंड हैव अ नाइस डे।